Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the fifth of the complex controllers which are present in your book. So the name of this controller is rate feedback compensator or proportional derivative compensator, and the transmittance is given as this 1 plus a s, and this is the effect on the steady state errors, that it may be improved or may be decreased, and relative stability is of course increased because you are introducing a zero with this compensator, and there is a change in n minus m because of one extra zero in the TFS. You will be having n minus m जो है वो -1 हो जाएगा, and of course there is no change in the type number because there is no such root. आप s is equal to 0 पे कोई root जो है हम introduce नहीं करा रहे. Now this particular compensator utilizes this following compensation configuration, and what is different in this configuration and the compensators we have used previously? कोई बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है इस चीज को? Halima, if you compare this with the previous compensators, can you identify what's the difference? Asfar? सर क्वेश्चन रिपीट कर. हाँ जी बोलिए. जी जी बोलिए. सर क्वेश्चन रिपीट कर दें. जी बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि if you see this compensation system and if you compare it with the last 4 compensation systems we have already studied, तो क्या difference आपको feel हो रहा है? Because there is one obvious difference with the other ones. Feedback gain है sir. सर फीडबैक गेन. फीडबैक के अंदर जो है वो आपका जो ट्रांसमिटेंस है जो HCFS है, so that's why इसको GCFS नहीं कहा उसने और उसने इसको डिफरेंशिएट किया है और HCFS कहा है. Absolutely right, you have identified correctly. So for this rate feedback compensation system or proportional derivative system, the transmittance is HCFS जो है that is 1 plus AS, and the compensator has an output that is proportional to the input and an output that is derivative of its input. So this component, ये वाला जो portion है, that is creating the derivative and that is giving you the proportional component. ठीक, because of the derivative component in the output, the type of device or the controller is called proportional derivative compensator or proportional derivative controller. So when we have to design these rate feedback compensation systems, of course we will have to select K and A, because अगर आप देखें तो आपके पास एक पैरामीटर A होगा और अगर इस यहाँ पे बेहतर है तो यहाँ से HFS जो है HCFS जो है that is 1 plus AS और यहाँ पे आपके पास K मौजूद है. So इस बात का मतलब ये है कि if you have to design this compensator or controller, you have to select this K and you have to find out कि कहाँ पे आपका zero जो है वो located है. ठीक, so that's the design parameters which you have to select. What this compensator is doing, well, the controller or the compensator, as we have already discussed, that it is adding 0 at s is equal to -1 over a, and as a result of this addition of one open loop 0, the value of n minus m is decreased by 1, and because of this decrease of n minus m, the asymptotic angles जो हैं they will of course increase, and which will be generally improving the stability. Any questions regarding these two things?
No, sir. Anyone sitting in the class can confirm कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir, आ रही है। सर अभी आ रही है। Okay. जी बेटा, any questions regarding the comments we have made or the statements we have made? No, sir. No, sir. Okay. Then please comment on this. जी बताइए इस बात का क्या मतलब है? पहले तो ये बताइए कि एसिम्प्टोटिक एंगल जो है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है? इरफान, नंगियाल, सर n माइनस m की वैल्यू क्योंकि चेंज करी है सर, इसलिए n एसिम्प्टोट माइनस m हमारा की वैल्यू किस तरह से? कोई लॉजिकल बात करें ना, वो तो लिखा हुआ है, आप जरा थोड़ा सा इसको लॉजिकली प्रूव करें ना। एसिम्प्टोटिक एंगल का क्या फार्मूला होता है? बेटा जवाब तो फौरन दे देना, अगर नहीं भी आता तो सर फौरन एंगल मेड बता बाय दो। 0 माइनस एंगल मेड बाय पोल्स प्लस 180 डिवाइडेड बाय n जी माइनस जी m। बिल्कुल ठीक, डिवाइडेड बाय n माइनस m। अगर डिनोमिनेटर में n माइनस m जो है अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि आपका एसिम्प्टोटिक एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना? यस सर। जब एसिम्प्टोटिक एंगल इंक्रीज करेगा तो उससे जनरली हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ती है। उसकी वजह क्या है? ये सिचुएशन है। अब मैं आपके सामने दो, यहाँ पे सपोज ये सिचुएशन है, सपोज एक का एसिम्प्टोटिक एंगल ये है और दूसरे का एसिम्प्टोटिक एंगल ये है। कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, ग्रीन वन और रेड वन? सर ग्रीन वन। वाई? सर क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है सर क्रॉस ओवर करने में। ज्यादा, जबरदस्त, ग्रेट, गुड, ओके। सो अब अगर हम स्टेडी स्टेट एरर पे इसका इफेक्ट देखें तो इनफैक्ट वी आर इंटरेस्टेड, स्टेडी स्टेट एरर इफेक्ट्स अगर हमने देखने हो तो हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं? वी आर इनफैक्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ki compensated divided by ki uncompensated। ये रेशियो जो है हमने फाइंड करनी होती है, और अगर हमें के आई कॉम्पनसेटेड फाइंड आउट करना हो, रादर अनकॉम्पनसेटेड को पहले देख लेते हैं। जी, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस? आयशा सदीका, हलीमा, इरफान, हसनैन मुआविया। सर k/5। क्या हो गया, क्या नाम है सर आपका? सॉरी 1/k सर, 1/k। नहीं मेरा बेटा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस मौजूद हो तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? द बेसिक फार्मूला इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s रेज़्ड टू पावर I g c of s, g p of s
एंड अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में GCFS जो है वो K है. We have done it so many times. ठीक. So this is for KI for uncompensated system, and if we are interested in KI for compensated system, of course we need the same thing, limit S tends to 0, SI, GCFS, GPFS, which is in fact the forward path transmittance. Normal पिछले वाले जो हमारे जितने भी थे controllers, उनमें हम GCFS, GPFS was the forward path transmittance, but in this case क्योंकि आप find out का अपने feedback system में आप अपनी transmittance को use कर रहे हैं, so you will be looking for the equivalent forward feed path transmittance for unity feedback. So in that case, that is this thing. So GEFS आप कह रहे हैं कि that is my forward path transmittance for unity feedback. So that is this thing. So what you will be doing, the ith error coefficient Ki compensated will be equal to limit S tends to 0, Si, and that's your forward path. And ultimately you will end up with this thing, that limit S tends to 0, S raised to power I, and this thing will come over here. ठीक. And to simplify our mathematics and to reach this thing that we are interested in, this Ki compensated or Ki over uncompensated, what we do, we multiply both denominator and numerator by Ku over K. So K is the constant for this particular controller, and Ku is the constant for the proportional constant for the uncompensated system. So what you will be getting, this thing. So you have just replaced, multiplied everything, both denominator and numerator, with K over Ku, and as a result of that you are getting this thing. अच्छा, अब जरा इस चीज को गौर से देखें कि ये जो चीज आपके सामने रखी हुई है, what is this? अभी देखा है, ये कह लें या ये कह लें, it's the same thing. Question is Ki uncompensated, और अगर इस पोर्शन को देखें Ku और K, तो उसी तरह से रह जाएगा प्लस A. And what about this one? If I have limit S tends to 0 and Ku S GPFS, what is this? Isha, Asfar, बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर मेरा कनेक्शन का काफी इशू आ रहा है सर, काइंडली अगर रिपीट कर दें. आप कौन सा हैं आप? असफर सर. यस सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो रेड में मैंने लिखा है, इसका रिजल्ट क्या है? है कोई आइडिया? यार यस नो ही कर दो, कोई इतना टाइम क्यों लगा देते हो? बस ठीक है, नो सर, कोई बात नहीं, ठीक है. सो इन फैक्ट दिस इज S1 and so that would be K1, but that would be K1
uncompensated, because we are using KU. So that is AK1 uncompensated, and this is the situation, and the ratio, we are interested in this ratio. So that would be equal to 1 over KU over K plus AK1 uncompensated. And of course, अगर मुझे एरर कोएफिशिएंट्स अपना इम्प्रूव करना है तो मुझे ये रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 चाहिए, और इस केस में जो आपके सामने एक्सप्रेशन मौजूद है, दिस मे बी लार्जर और स्मॉलर देन फॉर अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम, यानी कि कॉम्पनसेटेड जो है दैट कैन बी लार्जर और smaller than for the uncompensated system, and that is depending on this denominator. But if we want to increase the chances of increased error coefficients of the compensated system, we must have to have K should be greater than KU. यानी अगर सिर्फ हम चांसेस ही इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो K अगर KU से ज्यादा होगा तो कम से कम ये पोर्शन जो है, ये डिनोमिनेटर का ये लेस हो जाएगा. बाकी जो चीजें हैं वो तो यहाँ से आ रही होंगी, ऑफ कोर्स दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग, बट ऑफ कोर्स इफ वी वांट टू चेंज improve the chances for having better compensation ratio in favor of a compensated system, we must need K should be greater than KU. And the main aim जो है आपका for primary, or the primary intention of using PD or rate feedback compensator is to improve the relative stability of the system. That is to move the closed loop poles of the uncompensated system to the left of their location. So again, as we have said कि हमने दो parameters हैं जो कि हमने select करने हैं, which are K and capital A. और so now to understand the process of selecting K and A for the rate feedback compensated system जो है हम उसको apply कर रहे हैं on a type 1 second order plant पे हम उसको apply करते हैं. So that's my rate feedback system, और यहाँ पे मैं अपना जो compensator है, rate feedback compensation है, मैं उसको अपना plant पे implement कर रहा हूँ. The closed loop transfer function जो है आपका, that would be obtained. You are quite familiar with it कि किस तरह से आप इसको find out कर सकते हैं. But the main thing is कि क्योंकि अब हमने root locus find out करना है, तो we need to transform the denominator in the form of 1 plus a g of s h of s की form में हमने इसको ले जाना है, because then we will be interested in this thing. So if you solve this, so ultimately a g of s h of s जो है आपका वो ये हो जाएगा. ठीक. So as we have already discussed that in order to improve the chances of increased error coefficient of this compensated system, we need K greater than KU, or K over KU जो है, that should be greater than 1, so that the steady state accuracy in comparison to the uncompensated system is not degraded. So in this particular case, the maximum relative stability is achieved when closed loop poles are critically damped. यानी ये अगर आपके poles हैं इस particular case में, ये इस तरफ move करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे A की value बढ़ना शुरू होती है तो ये इस तरफ move करना शुरू करते हैं, तो ultimately the maximum distance from the j omega axis will be at this point. So at this point the system is critically damped and the damping ratio is 1, and we have double real closed loop poles. So for this relative stability, as we were doing previously, we find A and go back to original T of S. For this selected A, we change the values of K and repeat our process until we get our required performance criteria. इसी तरह से अगर हम type 0 model पे इसको apply करें तो we will be getting the value of A in a similar fashion for the maximum relative stability. Any questions? No, sir. Oh, okay, great. Challenging. Now we are in position to apply
In fact, that's the design procedure which I have been repeating for all the designing all the controllers, and you must be quite familiar with this. इसको तो repeat करने की ज़रूरत नहीं है. But as I'm saying that we are in a position to apply our rate feedback system on or a proportional derivative controller on our example system. और example system जो हमारी है उसमें जो plant का transmittance है, we have been using this plant transmittance for 5 examples, starting from uncompensated system, and then for PI controller, and then for um, lag systems, lead system, lag lead system. So this is the same plant we are using, and HCFS जो है इस केस में again that is 1 plus AS, and the transfer function of this system, if you will be calculating it, that would be in this form. So there is no problem from moving from this step to this step, because you are just getting a solution of this closed loop negative feedback block diagram. Now we will be looking for the root locus. We will be finding out the root locus for this AGFS HFS. But before doing that, as we have to suppose that K over KU should be greater than 1. Here it is supposed that K over KU is equal to 2. And we know that for uncompensated system, KU was equal to 3. So using this relationship, we will end up with K is equal to 6. So putting K is equal to 6 in this equation, we will end up in this form. So we will be using this for designing our root locus. और अगर आप इसमें देखें तो आपके पास एक open और 3 open loop poles हैं. These are the locations of the open loop poles, and that's the location of the open loop 0. And then when we will be changing our A, आपके रूट लोकस वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे. वो अपना जो ओपन लूप पोल्स हैं वो क्लोज लूप पोल्स में जाना शुरू हो जाएंगे. और ऑफ कोर्स देयर आर 2 एसिम्पटोट्स, तो वो ये ऊपर की तरफ, और ये वाला जो आपका पोल है ये मूव करेगा इस ओपन लूप 0 की तरफ. एंड व्हेन A is equal to 0.51, you will be getting your maximum relative stability जो है वो आपको अचीव हो रही है. Any questions regarding this? सर K by KU हमने इसके अंदर 2 सपोज किए सर, तो हमारे पास कंडीशन सर ये थी कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो सर हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं ग्रेटर देन 1? कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं. मैं तो जो बुक में यूज हुई है ना सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. सो अगर आप सपोज करते हैं कि K over KU is equal to 1.5, तो you can end up with this thing as well. कोई समस्या नहीं. राइट सर. It should be greater than, ठीक है. And of course KU तो हमें पता ही है पहले से, तो 3 multiplied by 1.5, in that case K is equal to 4.5 हो जाएगा. Just to avoid fractions, तो 2 करके उसको 6 कर दिया गया है, nothing else. राइट सर. ठीक है. Any questions regarding this? Irfan, are you sitting? Yes, sir. Okay, sir. जी, any question बेटा? Yes, sir. Okay जी. So maximum relativity is occurring at A is equal to 0.51, and remember this A is in fact the location of the 0, closed loop 0. The closed loop poles are then इस particular location पे आपके closed loop poles हैं वो कहाँ पे चले गए हैं? -1.33, -1.3 plus minus J 1.65. तो ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, सर्कल्स नहीं रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं या स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, these are in fact the location of the closed loop poles at maximum relative stability. Can anyone tell me what is the maximum relative stability at this point? जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? सर अबाउट 1.5 या 1.
जी एनी अदर पर्सन? एक आंसर आया है जी 1.5। सर ये 1.33 नहीं होगी? जी अगेन 1.33 होगी, यहाँ से नजर आ रहा है। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपकी मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी मौजूद है। That's the situation. -1.33 आपकी maximum relative stability है. Okay. Now for this value of A, which is 0.51, we will go back to our original transfer function. और original transfer function आपके पास क्या है? That is T of S K GP of S plus 1 plus K GP of S HFS, and that is in fact K over S square plus 4S plus 5 and divided by 1 plus K. अब आप 1 plus 0.51 S करेंगे because A is this thing, and divided by S square plus 4S plus 5, and finally you will end up with this thing कि आपके पास this is K over 1 plus kg of S P of S की टर्म्स में लेके जाना है तो it would be 0.51 into S plus 1.96 divided by S square plus 4S plus 5. So we will be plotting the root locus for variable K, and we will be using this component of our transfer function. ठीक, so that's the situation. अब आप इस पोर्शन को यूज कर रहे हैं for different values of K. So again K is equal to 6 पे ही उसे देखा गया है। Of course K is equal to 6 से आप बढ़ाते चले जाएंगे तो we will be having the closed loop poles will be moving in the direction of the asymptotes towards infinity, and of course आपके पास 3 poles थे, this one and this one, और अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास -1.96 पे एक ओपन लूप 0 था, तो अल्टीमेटली ये वाला पोल जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये वाले पोल जो हैं ये असिम्प्टोट्स की तरफ मूव करेंगे, एंड k इज इक्वल टू 6 पे आपके पास ये सिचुएशन मौजूद है। और अगर आप रैम्प एरर कोएफिशिएंट इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली हाउ यू विल बी डूइंग इट। सो GE ऑफ S आपको फॉरवर्ड ट्रांसमिटेंस जो है, forward path transmittance, we have already calculated this, that was K GPS over 1 plus AK of S KS GPS. So अब आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, so ultimately you will end up with K1 is equal to, that's the ramp error coefficient, so K1 is equal to K over 5 plus KA, and for K is equal to 6 and A is equal to 0.51, the ramp error coefficient is 0.74. Any questions? So if we see, the ramp error and the step response are given in this figure. The settling time for the step response is 2.5 seconds with no overshoot in this case, which is an improvement over uncompensated system. The steady state error and settling time are close to those of cascade lead compensated system. So we can conclude that the rate feedback system has improved stability and better steady state performance, and at this point we can end our design because we are supposedly we have obtained our performance characteristics. So K is equal to 6 or A is equal to 0.5 पे 0.51 पे we are closing our design procedure. But if you are not satisfied with that, so you can at this movement you can change K at every level, and so you can increase K is equal to 7 पे जाएं आप अपने performance specification देखें, अगर वो इससे बेहतर है तो you will fix that K is equal to 7, you will go back to your this portion where K will be fixed in that case, and as a result of that you will be tuning your A location of the 0 will be tuned, and similarly
you will be finalizing your performance characteristics. So here we are stopping our design procedure or process at k is equal to 6. So at k is equal to 6, we have a is equal to 0.51, where we had obtained our maximum relative stability. And so in this case, our HCFS was 1 plus 0.51s, and you can write this in this form as well. 0.51 को आप अगर common कर लें तो in that case s plus 1.96, the location of the closed loop 0 जो है वो आपका open loop 0 आपका TFS में that is minus 1.96 पे आप place करेंगे अपने system. Any questions? No question, sir. Okay, great. एक मिनट होल्ड कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कहाँ पे? जी जी मैं बैठा हूँ. अच्छा मैं भिजवा दूँगा. अभी फिलहाल मैं क्लास में बैठा हूँ तो भिजवा दूँ. ओके. जी जनाब. No questions? जी नंग्याल बैठे हैं बेटा? Yes, sir. जी एनी क्वेश्चन बेटा? No, sir. No. ईशा आयशा सदीका बीबी हलीमा No question, sir. ओके. Okay, let's move to the final of the series, which is proportional integral derivative compensation, and the transmittance in this case is shown that we are introducing a 0 at s is equal to minus a, and at minus 1 over a. Two zeros are being introduced here, and a pole is introduced at s is equal to 0. So if we look at it, steady state errors पे इसकी जो effect है that is greatly improved. Effect on the relative stability that is increased as well. Change in n minus m को अगर आप देखें तो of course as we are introducing two zeros and one pole, so as a result of that आपका n minus m पे जो effect है that would be minus 1. So and the change in type number, that's very important कि type number जो है आपके system का because of this pole वो increase कर रहा है +1 पे increase कर रहा है. So that's the situation which is quite obvious कि इस case में आपकी performance जो है both in steady state error terms or in relative stability term दोनों cases में आप इसे improve कर रहे हैं. So let's see it. So another way of presenting the transmittance of PID controller is in this format, AP plus AI over S plus ADS. So अगर आप इसको compare करें जो पिछला हमने देखा है, we have said that JC of S is equal to K S plus A divided by S plus K A S. So इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यूँ लिख सकते हैं that is K plus K A over S plus K A S. So इस केस में अगर हम इसे देखें तो this component is AP, this component is AI, and this component is AD. So the AP terms provides proportional action where the compensator output is proportional to the input. So this is your proportional component or proportional action जो है that is K is responsible for that,
And then AIFS की अगर हम बात करें, that is providing you the integral action or the integral component of this transmittance. जैसे मैं क्लास में and ADS जो है that provides the derivative action or the derivative components. So as already said that in pole zero placement context में अगर हम देखें तो ये आपका transmittance है, और अगर आप in terms of proportional or integral or derivative components के terms में देखें तो ये आपका जो आपकी transmittance है that can be written in this form as well. Any confusions, any questions? No question, sir. What we are doing, we are introducing 2 zeros and 1 pole into our system. So अगर हम देखें कि अगर हम A को 0 करते हैं, the compensator demonstrates PI action, क्योंकि अगर A 0 होता है इस केस में तो क्या सिचुएशन बनती है, आपका GCFS जो है वो क्या हो जाता है, that is K S plus A over S. कुछ जानी पहचानी चीज है? ये सर PI compensator की transmittance है. ये PI compensator की transmittance है. So इस बात का मतलब है अगर कैपिटल A is equal to 0 है, the compensator demonstrates PI action, और अगर हम small a को 0 करते हैं, in that case आपका GCFS क्या है, that is equal to 1 plus K AS. ये भी जानी पहचानी चीज है, अभी थोड़ी देर पहले देखी है, ये PI के लिए था और ये प्रोपोर्शनल डेरिवेट कंपोनेंट है. सो इस बात का मतलब ये है कि बाय मेकिंग A is equal to 0 we will be getting the effects of PI compensator, and by making small a is equal to 0 we will be getting the effects of proportional derivative compensator. So the PID compensator is in fact it means that PID controller has attributes of PI controller, और PI controller के attributes क्या थे, the steady state improvement with some loss of stability, and plus the attributes of the PD controller which is the improvement of the stability. So PI के केस में हम steady state performance को improve कर रहे थे, और सब कुछ हमारी जो stability है वो at the cost of some loss of stability, और PD controller जो है वो आपको stability की improvement दे रहा था. So जब हम इसको combine करेंगे, the claim is that we will be improving the steady state performance, and at the same time we will be improving the stability as well. So in order to get the combined effects of PD and PI compensator, PID compensators are using different configurations. So इसको अगर हम देखें तो ये different configurations हैं जो PID controller जो है वो इस्तेमाल करता है. So this is called cascade compensation, यानी आपके पास जो भी ट्रांसमिटेंस है आपके कंट्रोलर की, दैट इज कैस्केडेड विद योर प्लांट, और यूनिटी फीडबैक के साथ आप चल रहे होते हैं. यू कैन हैव द फीडबैक कॉम्पनसेशन, आप कॉन्फ़िगरेशन भी आप यूज कर सकते हैं वेयर आपके पास जो K है दैट इज इन कैस्केडेड विद योर प्लांट, एंड जो आपका ट्रांसमिटेंस ऑफ द प्लांट कंट्रोलर है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन योर feedback system. Similarly, there is combination of cascade and feedback compensation where this is PI component, और ये आपके पास जो है this is your PD component that is being used as cascade and in the feedback, or similarly that is again आपका pole जो है PI component ही कह लें इसको, and that is your PD component, and that is being utilized as cascaded and feedback components along with your plant, and all the four configurations can be utilized as PID controllers, and they all will be referring to the same root locus, but of course their steady state performance will be somehow different. It depends on the designer कि वो आप उसकी requirements क्या हैं, और ease of implementation is the main thing कि किस तरह से वो इन चीज़ों को वो implement करता है.
So again, as we have said that k अगर given हमारे पास k हो और हम a is equal to 0 कर रहे हो तो we will be choosing for a pi compensator, and given k and small a is equal to 0, we will choose a for pd compensator, and the value of k then change for a selected a and small a and capital A to improve the response. This is the same procedure which we will be doing, and the values of small a, capital A and k can be iterated as required. यानी आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास k की वैल्यू मौजूद है, आपके k से कोई किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k से आप स्टार्ट करते हैं, आप you place a is equal to 0 and you will be choosing small a for pi compensator because that is giving you the location of the 0 in pi compensator. और फिर इसी तरह से small a को आप 0 करते हैं for given k, you will be choosing capital A which is location of the 0 for pd compensator, and the value of k is then changed because you have now got capital A, you have got small a, so you will be going back to the root locus, going to the root locus, and you will be getting the values for k, and after that if you are satisfied with that k, good enough. If not, then you will be switching and iterating all the values for small a, capital A and k. This is the process which we have been doing for all the previous 5 compensators. तो अगर हम इसे अपनी एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करें तो अगेन द GPS or the plant transfer function or the plant transmittance is same, which is 1 over s square plus 4s plus 5, and अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले डिज़ाइन में जब हम कैस्केड लैग लीड के लिए हमने स्टार्ट किया था कि हमने कैस्केड लीड के कोएफिशिएंट्स जो पैरामीटर्स थे वो यूज़ किए थे और कैस्केड लैग के पैरामीटर्स यूज़ किए थे, एंड वी यूज देम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. Similarly, we will be using the parameters or the values of k and small a and capital A, which we have already calculated for our pi and pd compensators as a starting point in this design as well. So previously designing pi controller, we had chosen small a is equal to minus 0.236, and for maximum relative stability with k is equal to 3, and of course a is equal to 0. So that's the situation for pi compensator, जिसमें k जो था that was equal to 3 and small a was equal to minus 0.236 for maximum relative stability. And अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि designing PD controller we have chosen a is equal to 0.51 and k is equal to capital K is equal to 6 हमने find out किया. ठीक है. So what we do, we assume कि हमारा k जो है that is equal to 6, and we evaluate the design at this particular point. So at this point g of s जो है that is in this form. Anyone can tell me from where we have obtained this? सिस्टम का फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन. जी बेटा, in fact this is GCFS को अगर हम देखें that was k s plus a divided by s plus k as, and इसको हम देख सकते हैं k a square plus k s plus a divided by s, and then इसे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं. Divided by s, and now the format we have obtained. और अब आपके पास k की वैल्यू जो है
आपने assume की है that is equal to 6. A you have calculated 0.51 and 1 over A is 1 divided by 0.51. So you will be reaching a square plus 1.961 S plus 0.463 divided by S. So this is the situation and you have to see it for K. So with K is equal to 6, the closed loop poles जो हैं आपके minus 0.489, minus 0.647, and these are the closed loop pole locations. So this is the situation. K is equal to 6 पे आपके पास ये जो पोल्स थे आपके ये पोल्स थे। अच्छा ये बताइए फैजान फजल इलाही यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट है कोई? मुझे याद आ गया आपके क्विज़ेस की एक बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट है कोई? कोई साहब बता दें। हसनैन मौविया यार सारे ही गुम हो गए हो, कोई एक बंदा हाँ ना ही कर दे। यस सर क्रॉस ओवर पॉइंट है। जी आपका नाम क्या है बेटा? सर इब्राहिम। जी इब्राहिम किस वजह से है जरा बताएं? Because that was the problem in concept for maximum of the people in this class, so that's why I want to discuss. Thank you very much इब्राहिम कि आपने जवाब दिया। क्यों आप समझते हैं कि यहाँ पे क्रॉसओवर पॉइंट है? सर क्योंकि राइट हाफ प्लेन जो है सर उसमें एक हमारे पास पोल पड़ा हुआ है सर। नहीं पड़ा हुआ, कहाँ पे पड़ा हुआ? राइट हाफ प्लेन सर में नहीं पड़ा हुआ, जीरो पे पड़ा हुआ, सर जीरो पे पड़ा हुआ। तो अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे तो आपके पास ओपन लूप पोल्स में एस स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये दो पोल्स सिर्फ डिस्टिंग्विश किए हुए हैं, इनफैक्ट जीरो पे पड़े हुए हैं दो पोल। उस केस में होगा, यस सर होएगा सर। फिर भी होगा। यस सर। कैसे? क्रॉसओवर पॉइंट नहीं होगा सर। क्रॉसओवर पॉइंट की इब्राहिम डेफिनेशन क्या है? सर कि वो इमेजिनरी एक्सिस को कट ऑफ करके आ रहा हो सर पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सिस में। ग्रेट, जबरदस्त, गुड। तो सपोज मेरे पास ये सिचुएशन है, प्रोबेबली हम अपने क्विज को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा एक पोल अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ओपन लूप पोल है और इसने फिर मूव करना है, ऑफ कोर्स सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव करना है। सो योर क्लेम इज दैट दिस इज योर क्रॉसओवर पॉइंट। Ibrahim? यस सर। सर No, it is not. It is not. It is not. The crossover point is कि या तो आप इस इमेजिनरी एक्सिस को लेफ्ट हाफ प्लेन से राइट हाफ प्लेन की तरफ जाते हुए क्रॉस करें, या आप लेफ्ट हाफ प्लेन से राइट हाफ प्लेन की तरफ जाते हुए क्रॉस करें। वी आर नॉट हियर क्रॉसिंग एनी पॉइंट। कोइंसिडेंटली आपका पोल जो है वो ही उस ओमेगा एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस पे प्लेस्ड है। सो दिस इज नॉट अ क्रॉस ओवर पॉइंट, दैट्स द लोकेशन ऑफ द ओपन लूप पोल। सो इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें। बहुत सारे लोगों ने क्विज में ये गलती की है, आई डेलिबरेटली प्लेस्ड ओमेगा इज इक्वल टू 0 देयर, और बहुत सारे लोगों ने उसको नन करके फिर बाद में वो गलतियां की हुई थी। बट ऑफ कोर्स आई हैव गिवन देम मार्क्स फॉर देयर प्रोसेस एंड प्रोसीजर, बट ये कॉन्सेप्ट की जो गलती है इसको आप करेक्ट कर लें। इब्राहिम आर यू करेक्टेड नाउ? यस सर समझ आ गया सर। ठीक है ना? क्रॉस ओवर पॉइंट हमेशा वो होगा जब आप क्रॉस कर रहे हो। सो इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास दो ओपन लूप पोल्स ये रखे हुए हैं, दो ओपन लूप पोल्स ये रखे हुए हैं, एंड अल्टीमेटली ये यहाँ से ब्रेक अवे पॉइंट है कोई? ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं?
यार अब तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। सर ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करता है सर जीरो के ऊपर। जीरो के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज योर ब्रेक अवे पॉइंट एंड दैट्स योर ब्रेक इन पॉइंट। सो रूट लोकस जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक। और उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है, एक जो कंपोनेंट है वो इस तरफ को टर्न किया है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस तरफ टर्न कर गया, बिकॉज दैट्स अप्रोचिंग टू दिस जीरो। सो अगर हम इस वक्त सिचुएशन को देखें तो k इज इक्वल टू 6 पे पोल्स, ये वाला पोल जो है वो यहां पड़ा हुआ है, दिस वन। k is equal to 6 पे this pole is at this location, k is equal to 6 पे जो यहां से चीज आ रही थी सपोज वो ये पड़ी हुई है और जो यहां से चीज आ रही थी वो ये पड़ी हुई है। So these are the location of the closed loop poles at k is equal to 6 पे। So k is equal to 6 पे आप अपनी परफॉर्मेंस देख लें, फिर आपने k को इम्प्रूव किया। So k is equal to 12 पे ये पोल इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, ये इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, वेरी ऑब्वियस। ये वाला पोल जो पड़ा हुआ है ये इधर मूव करेगा, इस जीरो को अप्रोच कर रहा है, और ये वाला पोल जो है ये इस तरफ मूव करेगा इस जीरो के लिए। So k is equal to 12 पे अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, k is equal to 12 पे this one, the green one, this one and this one। So ये locations हैं आपकी k is equal to 12 पे। Any questions regarding movement of the poles and zeros on this root locus for different values of k? Sure. ठीक है बेटा। यस सर। सो इब्राहिम ये बताइए कि कितने ओपन लूप पोल्स थे इसके अंदर? सर 4 ओपन लूप पोल्स थे। और ओपन लूप जीरोस? सर एक। दोबारा देखो और से देखो। सर दो। दो पड़े हैं, एक ओपन लूप जीरो पड़ा है एट s इज इक्वल टू अपना some value -2.7 -0.274 पे, और दूसरा पड़ा है -1.69 पे। So these are the locations of the open loop zeros and we have open loop poles भी आपके पास पड़े हैं। So this is the situation। अब आपके पास k is equal to 6 पे the ramp error and the step error are given। The steady state error is 0। Why? Why? टाइप नंबर इंक्रीज हो गया। Great। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। Very good, Muhammad Ali. Because the type number is increased, that's the reason of is making the steady state error equal to 0। और अगर आप देखें तो टाइप नंबर जो है सिर्फ आपके दो ऐसे कॉम्पनसेटर्स हैं जो कि टाइप नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। कौन कौन से, मोहम्मद अली? पीआई और पीडी। नो, पीडी तो नहीं कर रहा, पीआई और पीआईडी। और Yes, इनफैक्ट पीआईडी के अंदर वो पीआई वाला कंपोनेंट जो है वही टाइप नंबर इंक्रीज करने की वजह बन रहा है। और दोनों की जो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो दोनों की जीरो है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आप उसका टाइप नंबर जो है सिस्टम का वो बढ़ा रहे हैं। सेटलिंग टाइम इज एट k is equal to 6 is 7.5 second, which is not good enough with 17% overshoot। But when we do it for k is equal to 12, तो k is equal to 12 के लिए of course we have already discussed closed loop poles जो है उनकी लोकेशन जो है वो बदल रही है, and as a result of that when we see the steady state performance, तो इस केस में स्टेडी स्टेट एरर जो है वो अगेन जीरो होगी बिकॉज टाइप नंबर तो आपका चेंज नहीं हो रहा, बट सेटलिंग टाइम इंप्रूव कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग ओवरशूट। सो यू कैन ट्रेड ऑफ है कि आप सेटलिंग टाइम बेहतर चाह रहे हैं, ट्रांजिट रिस्पांस आप बेहतर चाह रहे हैं, जो भी आप इस केस में आपकी एप्लीकेशन
डिपेंडेंट पैरामीटर है कि जिस तरह से आप अगर ओवरशूट ज़्यादा जाके और सेटलिंग टाइम आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो यू विल मूव फॉर k इज इक्वल टू 12, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरशूट जो है वो कम हो और सेटलिंग टाइम इज नॉट अ बिग इशू, in that case you will be going for k is equal to 6, or you can tune for k somewhere between k is equal to 6 and 12. So these are our 6 compensators, and in fact before closing everything I would like कि मैं मेरी ऐनक जो है वो कहीं खो गई है. Okay, so I would like कि मैं एक repetition जो वो कर लूँ. For the PID compensated system, the step response rise time and step response overshoot values are between those of PI and PD compensated systems. Thus the stability is better than for PI compensation with the same steady state error. Our design goals are met, so we are saying that okay, we are stopping at k is equal to 12, and PID and cascade lag lead compensator provide similar settling times and percentage overshoots. So as I said कि मैं थोड़ा सा summarize करूँगा कि what we did in this whole chapter. We started our discussion of this chapter with the adding and cancelling poles and zeros. We discussed exact cancellation, which was responsible for the faster response, or we also discussed approximate cancellations. Then we moved to proportional compensation systems, which we called as uncompensated systems. There we had only one tuning parameter, which was k. So we observed from root locus that as k increases, the damping ratio of the dominant poles decreases from 1 to 0. We also concluded that the damping ratio of 0.707 provides the minimum settling time. Then we went into we said that if we further want to improve the system performance, both in terms of system stability or steady state error reduction, we will require more complex or sophisticated compensators, which cannot be जो performance specification अगर मजीद आप improve करना चाहते हैं तो जो आपका proportional compensator है या कंट्रोलर है, अब उसके हाथ में ये चीज नहीं रही. वो कहता है कि कहीं और जाएं, अब आप इसको कहीं किसी और तरीके से सेटल करें. So we required more complex or sophisticated compensator, and that was one of the reasons that the proportional compensation was referred to as uncompensated system in comparison with those complex compensators. Okay, we started our discussion on complex compensators with cascade PI or proportional integral controller. क्या कर रहा था ये controller was adding a pole at origin and a zero at some location A on the left, in the left half plane, and in fact GC of S जो था that was equal to K into S plus A over S. There is no change in system open loop poles or zeros, so that's why n minus m जो है वो constant रह रहा था. So as a result of addition of pole on the origin, what was happening, the relative stability of the entire system जो है वो decrease कर रही थी. But at this cost, the steady state performance जो है, we were improving that. The main reason of steady state performance improvement was, as Muhammad Ali said, mentioned right now, that was the PI controller जो है, that was increasing the system type number by 1, which in turn improves the ramp and step error performances. रैम्प एरर कोएफिशिएंट इन्फिनिटी हो जाता है तो 1 over k1 जो है वो आपका रैम्प एरर है, and that is equal to 0. And in this case, of course, the design parameters are k and a. You start your design as we have been discussing it again and again कि आप अपना k जो है आप रखते हैं जो आपके पास अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम का होता है, आप वहाँ से इनिशियलाइज करते हैं अपने k को, और उसके बाद यू आर लुकिंग फॉर योर a. So you make your transfer function and root locus which is dependent on a. So आप वहाँ a की वैल्यू को चेंज करते हैं and you go for the maximum relative stability. Once you find that a, तो आप वापस आते हैं अपने ट्रांसफर फंक्शन पे, वहाँ पे अब आपके पास a की वैल्यू मौजूद है. Now you fine tune it for
ऐसी वैल्यू k के लिए जहाँ पे आपकी टाइम रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर हो सके। और अगर आप ये फाइन ट्यूनिंग जो है आप आइट्रेशंस करते रहना चाहते हैं फॉर k एंड a फॉर योर रिक्वायर्ड परफॉर्मेंसेस, तो यू आर अलाउड टू डू इट। और जैसे ही आपको अपनी टाइम सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है आप कहते हैं कि यस ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो यू stop your design procedure for that value of k and for that value of a. So this is your PI compensator. Then we move towards cascade lag compensation system or controller. In this case, the transmittance was k into s plus a over s plus b, where a, k, and b are constants, and we are assuming that a is greater than b. So in this case, what will happen? कि a greater than b है, b पे आपका पोल लोकेटेड है, a पे आपका जीरो लोकेटेड है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग कि आपका पोल जो है वो जीरो के राइट साइड पे है, इसका मतलब है वो जो ओमेगा एक्सिस के करीब है। तो relative stability when compared with uncompensated system is reduced, and at this cost the steady state performance is improved as was being done in your PI compensation, but the relative stability when compared with PI compensator is improved because अब आपका ओरिजिन पे पोल नहीं पड़ा हुआ, अब आपका पोल जो है वो मूव कर गया है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो द स्टडी जो आपकी relative stability है with respect to PI compensator is improved, and the steady state performance is better than that of the PI system. The design parameters are of course K, A है, B है, because K तो वही आपका proportional constant है, but A and B are the locations of zeros and poles, and in order to design this controller or compensator, you have to know कि आपने अपने zeros and poles को कहाँ place करना है. In that context we discussed the value D, हमने एक ratio parameter define किया, which is in fact A divided by B, and we have said that A is greater than B. In that case D will be greater than 1. So the cascade lead compensator is another variation in controller designs. In that case the transmittance was same, but in this case आपका जो B था that was greater than A. So इस बात का मतलब ये हुआ कि A पे आपका zero located है, B पे आपका pole located है. So what will happen as a result of applying this controller design, आपका जो controller है वो अब एक pole place कर रहा है which is on left of A. So इस बात का मतलब ये है कि उसका distance जो है geometric axis से वो ज़्यादा है. So इस बात का मतलब है relative stability जो है वो increase हो रही है, and we are interested in improving the steady state performance as much as possible. Again the design parameters are K, A and B, and in this case D will be equal to B over A. Now to combine the advantages of cascade lead and cascade lag compensators, a cascade lag lead compensator was discussed. The compensator adds 2 zeros and 2 poles in the overall system. So the compensator, along with increasing the relative stability of the systems, improves the steady state performance as well. All the 4 controllers discussed so far were being cascaded with GPS having unity feedback systems. Then we move to PD and proportional PD or proportional derivative compensator. The controller utilizes transmittance in its feedback. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको discuss किया है, and HCFS जो है that is equal to 1 plus AS, where capital A is the location of your zero. So this is in fact introducing zero in the system. Relative stability of the system increases, and we are interested in improving the steady state performance as much as possible. Finally, to combine the effects of PI and PD controllers, we discuss PID controller. This controller improves system type number, therefore the error performance of this system is improved. So these are our 7 controllers. If we include uncompensated system as our proportional controller as well. So in that case ये 7 controllers हैं जो कि आप अपनी practical systems में use करते हैं. Mostly PID, as I was saying कि industry में ज़्यादातर जो है आप ये वाले controllers जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. You have seen the circuitry in terms of operational amplifier implementation के context में हमने इसकी circuitry जो है वो discuss की.
We also discussed something about the PLC implementation, that how these controllers can be implemented using ladder programming, कि किस तरह से आपके पास ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स में आप इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को ट्यून इन करते हैं by seeing the response of your system. Suppose एक वॉल्व है और उस वॉल्व के फ्लो जो है उसकी बेसिस पे आपने अपना वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो उसको ट्यून करना है, तो इन दैट केस यू विल बी ट्यूनिंग योर पीआईडी कंट्रोलर, और वहाँ से जो सेंसर्स लगे हुए हैं वहाँ से आपको इनपुट्स आ रही हैं. ऑफ कोर्स दीज आर एनालॉग इनपुट्स व्हिच आर गिविंग यू द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड जो कि उस वॉल्व में से गुजर रहा है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच प्रैक्टिकली द इंजीनियर्स आर डूइंग in application designs in the industry. Now questions please. जी, any questions? अच्छा, चले मैं इसको जी आतिफ अली. आतिफ अली बैठे हुए हैं. अबशार हसन. आयशा सदीका. यस सर. जी आयशा, मुझसे एक क्वेश्चन कल पूछा गया व्हाट्सएप पे कि हम किस तरह से अपना सेटलिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन मौजूद हो तो. हैव यू गॉट एनी आइडिया? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? नो सर. जी कोई बात नहीं. जी इरफान, आप दे सकते हैं इसका आंसर? यस सर, वो 1 और ओमेगा एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उससे हम डैम्पिंग रेशियो को फाइंड कर लें फंक्शन की. असफर. असफर अल्ताफ सियार, जिनका माइक भी ओपन है. जी फिजा. हुजैफा. यार अब क्या करते हो, बस ऑन करके चले जाते हो, चक्कर क्या है? इब्राहिम शफकत. अबू बकर अजीज. जी मोहम्मद अली. सर 4/zeta ओमेगा n होता है, तो जीटा और ओमेगा ग्रेट, n कहाँ से जबरदस्त. फंक्शन? तो इस बात का मतलब है कि आप अपने, थैंक यू मोहम्मद अली. इस बात का मतलब यह है कि आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस और इन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर की फॉर्म में अगर आप ले आते हैं, तो इस बात का मतलब यह है कि यू कैन फाइंड ओमेगा एन एंड जीटा एन फॉर योर सिस्टम, और ओमेगा एन एंड जीटा फॉर योर सिस्टम, एंड वंस यू नो इट, और अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, एंड इनफैक्ट यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट नंबर 2, एंड इफ यू हैव डन इट बाय, अगर आपने खुद से की है, तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि किस तरह से आप अपना सेटलिंग टाइम और ओवरशूट और ये सारी चीज़ें जो हैं आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए. जी सर नहीं, अगर हाई
सर अगर हाई ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन हो तो उसमें अगर हम तो पोल कैंसिल करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा हमारे नहीं, सिस्टम में? कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप डोमिनेंट पोल्स के कॉन्टेक्स्ट में अब फिर आप बात कर रहे होंगे, ठीक है। यस। तो उस केस में आप देखेंगे आपका डोमिनेंट पोल्स क्या है, आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को उस तरफ लेके जाएंगे जो आपका डोमिनेंट पोल का सिस्टम है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने सिस्टम को, बिकॉज अगर आपके पास 10th ऑर्डर सिस्टम है एंड योर डोमिनेंट पोल्स आर टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, तो आपका एक्चुअल जो डोमिनेंट पोल्स ट्रांसफर फंक्शन है दैट हैज द इफेक्ट ऑन दैट सिस्टम, या ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के तौर पे बिहेव कर रहा है वो, एज कंपेयर टू द 10th ऑर्डर सिस्टम, बिकॉज you have two dominant poles in that case. Have I answered your question? यस। Okay, चलिए, any other question? सर जो हमें टेबल्स के अंदर सर गिवन था कि जो उन्होंने कंपैरिजन किया होता है बिटवीन डिफरेंट कॉम्पनसेटर सर, तो वो हमें अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम से सर उन्होंने कंपैरिजन किया होता है या जी, वो अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम ऊपर अगर आप देखें उसी टेबल में k is equal to 3 के लिए अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम भी दिया हुआ है, राइट सर? ठीक है। तो अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम का रेफरेंस जो है वो वही है ना। राइट सर। यानी यूं समझ लीजिए कि आपने अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल कॉम्पनसेटर आपने किसी प्लांट पे इम्प्लीमेंट किया, तो उस केस में आपको क्या चीजें मिली, टाइम परफॉर्मेंस क्या मिल रही है, और फिर उसके बाद क्योंकि आप उस k इज इक्वल टू 3 पे बैंक कर रहे हैं, आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इट्स प्रोपोर्शनल कैस्केड, प्रोपोर्शनल कैस्केड सिस्टम है। जो भी आपके कैस्केड लैग है, कैस्केड लीड है या कैस्केड लैग लीड है, तो दे आर द रेफरेंस पॉइंट जो है आपका, दैट इज योर प्रोपोर्शनल कॉम्पनसेटर और अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम। इब्राहिम, हैव आई आंसर्ड? यस सर। इंशाल्लाह ताला परसों जो है आपका क्विज है, which is again fill in the blanks and multiple choice questions होंगे. You will be given 15 minutes or rather less than that, 12-13 minutes, and you will be having 10 questions. So again अगर आपको ये सारी discussions जो हैं आपने तो गौर से सुनी हैं, तो it's a duck shoot, कोई इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको। No questions? Should we stop? नो क्वेश्चन सर। ओके, जो अटेंडेंस कर लेते हैं फिर उसके बाद